Ji, Assalamu alaikum everyone. And I welcome you to another and exciting, much awaited session, which is a power pack session on Power BI. I have already seen a lot of excitement on WhatsApp groups. So we are equally excited and thrilled. Before starting today's session, I think we still have uh, participants who will join us shortly. हम थोड़ा सा recap कर लेते हैं of our previous session और उसके बाद फिर I'll introduce today's master trainer and hand over the session to him. So before moving on to this particular today's session, any particular feedback on our last session, which was around power of networking, any questions, any confusion that you have in your mind, and we hope and we are positive that individually you all have started working on all those questions shared by Harun Saab in the last session. So any confusion around it, and in the meanwhile जब जितना आप questions लिखते हैं chat box और question area में, मैं आपको बताता चलूं frequent ask question था how we can get recordings of all these sessions and especially the last previous session. So अभी हम while we speak, I've requested Harun Saab to share the last link of last recording or the presentation delivered by Harun Saab. And for ease and comfort of all participants, what we'll do that at the end of this program, we'll share all links along with their topics and details ताकि आप उसको फ्यूचर में भी रिव्यू कर सकें. एंड सेकेंडली आपको हर सेशन ज्वाइन करने से पहले एक ईमेल रिसीव होती है विद दैट लिंक. आपको उस लिंक में भी इफ यू एक्सप्लोर दैट फर्दर आपको मजीद प्रीवियस सारे सेशंस के लिंक्स मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे. Anyways, do you have any key question, any feedback, any comment on that last session? You can write down your questions in the question box, or if you want to raise your hands, I can unmute you. So I think everybody is expecting कि कोई और question लिखे. So जिसका भी अगर कोई question या कोई comment है, we have over 40 participants in the group already. All clear. So which means Harun Saab, must be a sigh of relief for you कि आपका जो session था, it was very well received and everybody who joined today was crystal clear and have no further questions. That is great. So thank you very much, Shahid. I like crystal clears. So all praises for you. Now moving on to today's session, I hope you all have not only received that communication or the messages in the group जिसमें आपको Power BI को डाउनलोड करने के लिए उस डेस्कटॉप को डाउनलोड करने की इंस्ट्रक्शंस और लिंक दिया हुआ था. I hope you all have downloaded that. In the meanwhile, another piece of information कि यहाँ पर we have already uploaded 3 files which you can download on your system, and at the same time Khurram Saab, our master trainer, will share another document with you later today in the session. Before handing over to Khurram Saab, with housekeeping, we'll once again break for prayers somewhere between 7 and 7:15 depending upon, because हम कोशिश करेंगे कि कराची और लाहौर की मगरिब की अजान को हम किसी तरह से एक ही टाइम के अंदर मैनेज कर लें, बट 15 मिनट का गैप है, सो we'll somewhere break between 7 to 7:15. So let's start today's session. And today the topic is very interesting, Power BI, and we have a master trainer, Mr. Khurram Khan, with us, who has conducted several technology related sessions, CPD session for our members, and I'm sure some of you have already attended his sessions. Khurram Saab has been in this trainings for over 20 years now, and he has over 25 years of experience working in various sectors, including
education sector. So he was part of UMT as well, and currently working as a data analyst in the software house. So he will be delivering a Power Pack session on Power BI without wasting any single minute. I am now handing over to Khurram Saab. So Khurram Saab, over to you. By the way, you would not be able to see Khurram Saab's video. उनके कुछ problem था system के साथ आ रहा. We tried to fix that, but we thought let's keep that a mystery. So hopefully you will be able to see him later today, sometime, anytime. But even if it is not, maybe some other time. So over to you, Khurram Saab. Khurram, before you begin, if I can, sorry for interrupting. Before you begin, if I can make another quick announcement. जो handouts हमने upload किए हुए हैं, वो आपको go to webinar के menu handouts 3 और 5 में नजर आ रहे होंगे. The same handouts, अगर आपको download करने में यहाँ से कोई दुश्वारी हो रही है, so they have also been uploaded in the WhatsApp group. जो 7 digits program का WhatsApp group है, मैंने ये तीनों हैंडआउट्स वहां पे भी प्लेस कर दिए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. खुर्रम, आई नो चूंकि आप लोग मिस करेंगे, खुर्रम की वीडियो नहीं नजर आ रही होगी, बट एटलीस्ट दोज पीपल हु हैव अटेंडेड द एक्सपर्ट इन एक्सेल सेशंस, उनको खुर्रम का खूब पता होगा. खुर्रम इज अ मैथमेटिशियन एंड एन एक्सपर्ट. मैं इनको एक्सेल का मैजिशियन कहता हूँ, बाय द वे. So आप enjoy करेंगे खुर्रम के साथ ये session. So over to you, Khurram, now. Okay, thank you very much, Harun. Okay, just Assalamu alaikum, everyone. Please do confirm that you hear me well, and you have seen this screen that I've shared. Okay, type something on the text in the chat box so that I can confirm that you are hearing me and you are looking at my screen. Clear and screen is available. Okay, good, very good. Okay, that's brilliant. Okay, fine. Let's begin. Okay, let's start with the Power BI. What Power BI? Power BI is an application, right? It is from Microsoft, and it provides you the opportunity to at your data from different perspectives, right? Data is a data, right? And it is useless until and unless it is transformed into an information. So Power BI is a tool that turns your data into an information, that gives life to the data, that gives meaning to the data. And the of converting data into an information is for decision making. So Power BI is a decision making tool. Once you have the data, you can develop certain models, and then from that models you can get any type of information or the report dashboard that you want to build. You can have that, and you can interpret the data, right? Look at the data from different perspective. Maybe you are looking the growth of a particular product, maybe the regional sales, the city-wide sales, or whatever, right? So we have the unimaginable opportunities with the Power BI. So you can do a lot with the Power BI. So let me give you the overview that what we will be going to in this particular session. Okay, the objective that I was told is that that you be able to transform your data into an information. You can run your analysis with the data that you have, right, using the Power BI. So I will try to achieve this in this 2-hour session.
let's begin with this. Okay, this is the Power BI basic concept. What actually is going on, right? So we have the data, multiple data sources at the one end, right? We have data sources like Excel data, we have Excel tables, we have CSV files, we have Excel, SQL, and many other data sources. Within few minutes, we will see that what other data sources can be linked with the Power BI, right? Once you have the data sources, and that since the data sources have from different sources, it may be from different formats, right? What we need to do, we need to validate that data, right? We may be we may need to sort the data, maybe grouping, uh, doing subtotaling, formatting, right? Cleaning the data, whatever that we need to do. First of all, what we have to do is that we have from data sources, get this data sources from multiple uh, links, then putting and transform into the form that is visible for analysis. One concept which is known as ETL. ETL stands for extract, transform, and load. So what does it mean? To extract data from different data sources, we need to transform into the data using the Power Query, one of the components of Power BI, right? With the help of which these type of operation, we can clean the data, we can uh, put the data into a form with the help of which we can create models and then run our analysis. Now, after the transformation, we need to load this data sources into a data model. So we will see how we can construct a data model. And once we have the data model, we need to develop a relationship among different data sources or the different files that we have, right? Once we develop the data model, the model need to be extended for the objective analysis. So whatever objective that we have for the analysis, we need to extend this data model with the help of either by creating Myers or by creating different calculated columns. We will learn, we will see how we can create Myers, how we can uh, um create calculate price. Once we have developed these two, then we are in a position to develop certain reports and dashboard and then drill down by through slices. So that is the basic concept. We have the data, we have the raw data at one end, and we have the information in the form of reports and dashboard at the other end. We will interpret, we will analyze this reports and dashboards, which is actually an information, right? So that is the basic concept. We have the data sources. From the data sources, we have to build models, and from the models, we need to extract reports, dashboards, and that can be analyzed with the slices, and right. So that's we will be doing. So at the end of this session, we will try to build these reports and dashboards. For example, let's see, this is the basic of the Power BI. We have slicers over here. We have the air slicer, another one. We have one tabular form of data. We have the products, we have the quantity, we have the sales and the profits. So how we will calculate, we will do that in a minute. Right, we have this chart, right? We have the quantity by a product, so product C, D, P, A, whatever, right? So it shows that how, what numbers and what is the proportion of these, right? From this table, we have the sales by product. From here, we can profit by product from this. And this table is, this chart is the combo chart, right? We have the at one end in the bar form, and in the line chart we have the profit. So this shows that how it goes. And
since we have 4 cities and we want to have at a particular city, for example, Faisalabad, if we click the Faisalabad, so this is the performance of Faisalabad, right, for all the years, right? And similarly, we can have, for example, 2021 data, we have this. So we have the Faisalabad, we have the year 2021, and this is the sales performance of the Faisalabad. And similarly, we can do the rest of the thing, right? Then what the next is the kind of a report that we have the date at one end, this we have at the other end, and then we want to look at the month to date sales. So this is the month to date sales, right? So this is the quarter to date sales, and this is the year to date sales. How we will do calculate that we will see in a minute. Then we have another, right, uh, uh, report in which we have the previous time frames. We have, for example, the date at one end, we have the total sales at the other end. In the next column, we want to see what is the sale last 7 days sales. So we can have the different time frames. We can calculate time frames, calculate the sales, the profit, or whatever measure that we want to look at. We will see how we can do that. And similarly, we have the last month sales, right? Then we have another table that shows the year-wise sales. We have same period last year calculation. Then we have the last year sales calculation, right? We have the uh, uh, last month sales calculation that shows here. And similarly, we can drill down with this a slicer, right? So this is, if I click the Faisalabad, so this all these change, transform, and only show the information related to Faisalabad. And in the end, we have another dashboard, which is the current year versus last year YTD sales. So we will try to build this as well. So this is the last year year-to-date sales. Year-to-date sales means the first January of 20 till date, that is the 20th May 2020, and this shows the value, the sales of the first January till 20 May 2021, right? And this shows the total sales all along, right? And this is the table that shows the January, February, March current year sales, and this the last year sales of January, February. This is the city-wise sales. This is the product-wise sales that we will be focusing on, and we will build that. Okay, fine. Let's begin with this. Okay, now let me minimize this. Now open your Power BI. Right. So all of you should have Power BI installed and up and running. Okay, Ji. Okay, let me confirm. Okay, please confirm that you have installed this Power BI desktop and is running. Okay, good. Okay, that's good. Yes, installed and running. Okay, great. Okay, fine. Okay, fine.
I had it my official laptop. Okay, fine. Okay, so it means that most of you have done it. Okay, let's begin. And you must have downloaded these handouts, right? I guess so. So these are the three handouts: city table, fact table, and right. Okay, let me. Uh, these are the tables that we will be working. Right. This is the Excel. This is one. This is another one, and this is the third one. Okay. So these are the three files, right? We will be working on. So everyone has that. Okay, kindly download these three files because this session is based on these three files. Okay, good, you did it. You did that, Junaid. Okay, fine. Okay, save it at in a folder somewhere in your machine. Okay, fine. Okay, good. Okay, now the first step, and that is connect to the various data sources that we have. So good, Hamid, done. Very good. Okay. So what we will be doing, the first step is that we need to connect to the various data sources. And in this webinar, we have one data source, and that is the Excel files. I have put it in a folder, and I will connect these files with the Power BI, right? So click the Home tab. Once you have the Home tab with you, right, then you should see the following options. We have the Excel, the Power BI data set, we have the SQL service, we have different data sources, right? And if you click that get data sources, we have many uh, type of data sources that we can link to, right? So we have Excel, so click Excel, right? Find the relevant or these three files and click one of them. Now I'm clicking City TV. So I'm linking this file, this sheet, this workbook with the Power BI. Okay, now I'm clicking open, right? So it will take a bit of time. So we have the City TV, click City TV. If you look at the file, if you look at this file, we have the sheet name is City and the table is uh, so the table name is City, right? So this is the City TV. The table name is City and the sheet name is City, right? Once we have that, we need to look at which table to connect, which sheet to connect. So in this case, we are uh, connecting it to the city table, right? So we have the city code. We have 1234. We have the Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad. One represent Lahore, two represent Karachi, and so on and so forth. Now, if we want to say clean this data, then we need to run the transform data. It will take you to the Power Query. But since this data is already cleaned, so we don't need to do that. Just click load, right? And
it will take now loading data to model. It will take up okay 17.2 KB from CTTV access. Once the city table load, it will be shown right over here. That is the city, right? So we have the city, we have the city code, right? This process for the rest of the files. Okay, just click get Excel, right? Connect it with the fact table, table one, load it, right? And the third one. So the second file is loading to the table, right? Okay, we have the second one and we have the third one. So this is the, we have the city, we have the fact, we have the product table. So now we have three different tables present in the data. So product table, okay, fine. So here we have canvas. This is what we call a canvas. Okay, this is called the canvas. This is the filter area. If we want to filter our dashboard, we can use this pane. We'll do that later. This panel is for visualization. So what sort of visualization that we want to put in our canvas, right? We will select from here. And this is the field panel that contains all the sources, data sources. We have three data sources, CTTV and product TV, right? So in the fact TV, we have the city, date, and this, right? So we will take these things and put in the visualization. Okay, fine. So we have the data model. If you look at here, just underneath the file, we have three buttons. One is known as a report, right? This is the report right now. Click another one. This is the table view, right? This is the table view. If you select any of the files from here, this will show. Look at here, we have the fact table. I've selected the fact table. We have fact table, right? Similarly, if I click the product, it will show me the product table data, right? Okay. And the third one is the relationship. So I told you that we need to build a relationship. Okay, Ji, relationship is important. And what does it mean? Sorry, Khurram, my apologies for interjecting. Relationships explain करने से पहले अगर आप questions dialog box देख लें, there are a few people asking some basic questions. So if those can be addressed before you go on. Harun, can you read it for me? Gee, there are, for example, there's a question from Sidra Haq asking, they've installed Power BI and they're asking how to open Power BI desktop. Mohammed Ghayas is asking the same question. Okay. Okay, let me answer this question first. Two ways to do that. Maybe you have, once it is installed, right, click the start button, right, and you should find the Power BI option somewhere here. You can select from the Power BI or look at this. If I write Power BI here, so you should see the Power BI application. That is one way. And the second way, at the time of installation, there is a shortcut somewhere at the desktop. You can click that and you can have this Power BI, right? So there are two ways to
activate that, two ways to do that, right? Either select from start button, you should find somewhere here the Power BI, right? Microsoft Power BI somewhere here, right? And the Power BI, and you should be able to run that. And second is that if within the installation process, the shortcut is created for Power BI, just click that and it should be open, right? Harun, anything else? Yes, one more question again from Sidra. She's saying, I only have the option of paste or manually enter data. I hope this makes sense. Paste, cut paste, wala paste, or manually enter data. Sidra, if you can unmute you and you can explain yourself, if you like. Please raise your hand, Sidra, so that I can unmute you. Yes, Sidra, Thank you so much, unmuted now. Harun. Yeah, thank you so much, Harun. Basically, we had the Power BI application officially allowed. So my Power BI doesn't have the same interface as yours. So I'm not really sure that I should be again downloading the basic one, because here it is just letting me have the data added manually. It's not allowing me to export data, import data from Excel. Okay, there might be one reason for that. If it is an official laptop that you have, there might be a security person that maybe your IT policy or maybe the IT administrator does not allow you to do that. Maybe that is the only reason it may have. It does, if it does not allow you. So otherwise, if you have downloaded this file, click the home tab. In the data tab, data group, you click Excel, and you should be able to do that. If there is a security on your laptop, then you won't be able to do that unless and until your IT administrator allow you to. Yes, Harun, any other question? Oh, questions are flooding now. So let me very quickly throw a few on you. और फिर आप एक ही दफा उनको आंसर कर देना. Mohammed Waqas is saying, I'm still facing difficulty in watching the window, watching webinar in one window and performing the operation in another. My friend Mohammed Waqas, this is something we have to keep up with. आपको ट्रेनर के साथ साथ अपनी पेस मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे. और आपको फिर इसके बाद ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी. सो अगर आप अभी देख रहे हैं और बाद में आप खुद परफॉर्म करना चाहते हैं अलॉन्ग साइड द रिकॉर्डिंग, तो ये भी एक मुमकिनात में से है. आगे हैं जी, मोहम्मद शहजाद कह रहे हैं माइन इज नॉट इवन लोडिंग. इसी तरह वकार अली शाह कह रहे हैं देयर इज पावर बीआई डेस्कटॉप दैट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड. थैंक यू वकार. मोहम्मद शहजाद सुल्तान कह रहे हैं प्लीज चेक पिक्चर टू द मैसेज आई एम रिसीविंग व्हेन आई ओपन पावर बीआई इन द व्हाट्सएप ग्रुप. मैं वो पढ़ के बता देता हूँ. उसमें ये लिखा हुआ है जी, the procedure entry point create file to could not be located in the dynamic link library DLL. Okay, ये सिस्टम एरर आ रहा है जी. इसका मतलब है इंस्टॉलेशन का या परमिशन का कोई इशू है. So you probably need to install again, or you need permission to run this application on your system. शहजाद का रिस्पॉन्ड कर दिया हमने. There is another by the name of Power BI which is different. वकार अली शाह ने सपोर्ट किया है. Maria Sheikh कह रही हैं thanks sir, Khurram Khan is a great trainer and for this session. Thank you very much. And last one is
Khurram Saab, please run through the training, otherwise we will be drowned in the teething issues. Anyone having issues can watch the recording. Very appropriately said. Ali, so Ali की suggestion ठीक है, अदरवाइज हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, हम उसमें जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे. सो अभी खुर्रम आप प्लीज अपनी स्लो पेस में चलते जाएं. जिन लोगों को इश्यूज आ रहे हैं वो एटलीस्ट इसको देखते जाएं. बाद में ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, अपने सिस्टम पे तसल्ली से इंस्टॉल करके उसको रन करके फिर आप उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस कर सकें. सो ओवर टू यू खुर्रम एंड यू कैन कंटिन्यू. ओके, थैंक यू हारून. अच्छा जी, हम लोगों ने अब तक क्या किया, हम लोगों ने डेटा सोर्सेस कनेक्ट कर दिया और डेटा मॉडल हमारे पास आ गए. अब हमने करना क्या है, वी नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप. अब थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पता कर लें ये होती क्या है. हमारे पास ये टेबल है, अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ, वी हैव दिस फैक्ट टेबल, राइट. इस फैक्ट टेबल के अंदर ये हमारे पास एक डेट का कॉलम, एक हमारे पास सिटी है, एक प्रोडक्ट है और ये हमारे पास क्वांटिटी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खास गिवन डेट के अंदर एक खास शहर के अंदर एक प्रोडक्ट बेचा गया और इसकी क्वांटिटी. तो ये इस वक्त ये सिटी है, ये सिटी का कोड यहाँ पर दिखा रहा है, प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का कोड यहाँ पर आ रहा है और इसकी ये क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है. अब यहाँ पर हो सकता है कि हमारे पास जो डेट है, इस डेट के कॉलम के अंदर हमारे पास सेम डेट कई दफ़ा आ रही हो. जैसे फ्राइडे जनवरी 4 अगर है तो हो सकता है कि ये डेट कई दफ़ा इस कॉलम में मौजूद, राइट. तो हमारे पास कोई ऐसा एक होना चाहिए, एक या अभी इसको फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, मुझे अभी एक टेबल और क्रिएट करना है थोड़ी देर में. ये चीज़ में तब आपके साथ शेयर कर लेते हैं. फिलहाल यहाँ पर देखें, मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है सिटी और इस मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 1 to 4 हैं और इस कॉलम के अंदर 1 कई दफ़ा आ रहा होगा, 2 कई दफ़ा आएगा, 3 और इसी तरीके से प्रोडक्ट के केस के अंदर भी ये यहाँ पर आ रहा होगा. मुझे जब इस चीज़ को इंफॉर्मेशन, ये जो मेरे पास जो डेटा है, अगर मुझे ये चीज़ चेक करनी हो कि फ्राइडे को कौन से शहर में कौन सा बेचा गया, राइट, एंड दैट बिकम एन इंफॉर्मेशन. राइट नाउ दिस इज द डेटा. इस डेटा को अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना हो इनटू एन इंफॉर्मेशन, तो मुझे इसके लिए रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी और मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो सिटी की इंफॉर्मेशन, अगर सिटी कोड, सिटी की डिस्क्रिप्शन अगर कहीं पर पड़ी है तो वो साथ लिंक करनी पड़ेगी, रिलेट करनी पड़ेगी. सिमिलरली प्रोडक्ट के साथ भी हमें यही करना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो सिटी का टेबल है, उस सिटी के टेबल के अंदर हमारे पास सिटी कोड है 1 2 3 4 5. 1 रिप्रेजेंट कर रहा है लाहौर को, 2 कराची को एंड सो ऑन सो फोर्थ. और इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये कोड है और ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी प्राइस है और ये उसका प्रॉफिट मार्जिन है, राइट. अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा यहाँ पर ये जो मेरे पास रिलेशनशिप का जो बटन है, यहाँ पर मैं अब रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा ताकि जो डेटा है वो इंटीग्रेट होके रिपोर्ट की सूरत में या डैशबोर्ड की सूरत. अब यहाँ पर देखें, ये रिलेशनशिप ऑलरेडी क्या हो चुकी भी है, ये यहाँ पर डेवलप हो चुकी भी है. One of the beauty of Power BI is that if we have such a tables integrated into the data model, it automatically detect the available relations and create those, right. So sometime it is good and sometime we need to modify the correct and we need to change it. तो अब यहाँ पर देखें, मेरे पास सिटी है, इस सिटी कोड में 1 2 3 था, ये मेरे पास सिटी है. तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट हो गई है इन दो टेबल्स के दरमियान, जो कि है 1 to many. का मतलब है ये है कि इस सिटी टेबल के अंदर जो ये, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ सिटी के टेबल के अंदर, तो यहाँ पर आप देख मेरे पास जो सिटी की इंफॉर्मेशन है कोड 1 की, वो एक दफ़ा है. So there is only one record in this table. Similarly for Karachi we have only one record. So it means कि इस टेबल के अंदर एक जो डेटा की इंफॉर्मेशन है वो एक ही दफ़ा यहाँ पर आई है. लेकिन अगर आप फैक्ट टेबल के अंदर जाएं
तो फैक्ट टेबल के अंदर जो सिटी की इंफॉर्मेशन है या सिटी का डेटा है वो एक से ज़्यादा दफ़ा है। तो इसका मतलब है वैल्यू है वो यहाँ पर एक से ज़्यादा दफ़ा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास मैनी इंस्टांसेस ऑफ सिटी हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है जो कि वन टू मैनी कहलाएगी। ये ऑलरेडी वन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टार का मतलब है मैनी। सो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गई है वन टू मैनी। अब सिमिलरली मेरे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के अंदर भी मेरे पास एक जो है वो कोड, और यहाँ पर इस टेबल के अंदर क्या दिया हुआ था, प्रोडक्ट दिया हुआ था। तो प्रोडक्ट की फैक्ट टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट का कॉलम है उसके अंदर क्या चीज मौजूद है, प्रोडक्ट कोड मौजूद है। और अगेन इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट की जो इंस्टांसेस हैं, जो वैल्यूज हैं, एक से ज्यादा दफा हैं। तो इसका मतलब है इन दो टेबल्स के दरमियान भी जो रिलेशन की वो वन टू मैनी की होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रोडक्ट को कोड को सिलेक्ट किया, मैंने मैंने क्लिक किया और अब मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद मैंने ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ ड्रैग, जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा और इसको मैंने रिलीज कर देना। जैसे ही मैंने इसको रिलीज करना है तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। तो मेरे पास अब एक टेबल ये है जो कि फैक्ट टेबल है, जो कि रिलेटेड है प्रोडक्ट टीबी के साथ और इसी तरीके से सिटी के साथ। अच्छा, अब मुझे एक टेबल और क्रिएट करना है क्योंकि मुझे एनालिसिस भी करना है, मुझे मंथ भी लेकर आना है, मुझे और भी सारी चीज़ें करनी है। तो मेरे पास एक और टेबल होना चाहिए जिसका नाम होगा डेट टेबल। और डेट टेबल मैं पावर बीआई के अंदर ही बना सकता हूँ, राइट। दो तरीके हैं इसके जो रिकमेंड, ये है कि आप यहीं पर रहते हुए बनाएं और किसी भी एक फाइल, जैसे कि फैक्ट टेबल के अंदर मेरे पास डेट्स मौजूद हैं, इन डेट्स को इस्तेमाल करते हुए मतलब कि इसकी जो पहली डेट और आखिरी डेट, इन दो डेट रेंजेस के दरमियान मैंने कैलेंडर एक डेट टेबल बनाना है कि मेरे पास अब जो डेट टेबल बनेगा और जिसके साथ मुझे एनालिसिस करना है, टाइम सीरीज एनालिसिस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन डेट्स की रेंज एक डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि द अर्लीस्ट डेट एंड द लेटेस्ट डेट, द फर्स्ट डेट एंड द लास्ट डेट। मुझे एक यहाँ पर एक है मेरे पास, आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर आ जाएं कैनवस के अंदर। तो यहाँ पर देखें आपके पास अब डिफरेंट टैब्स बन चुके हुए हैं। इन टैब्स के अंदर एक टैब है जिसका नाम है मॉडलिंग, ठीक है। इस मॉडलिंग को क्लिक करें। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास एक न्यू टेबल आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस के अंदर यहाँ पर न्यू टेबल्स है, तो आप क्या कर दें, यहाँ पर न्यू टेबल को क्लिक कर दें। जैसे ही आप न्यू क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस जगह के ऊपर आपके पास एक प्रोविजन आ जाएगी कि आप डेक्स फंक्शन को, जो कि पावर बीआई के फंक्शंस हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, आप एक टेबल बना सकते हैं जो कि डेट टेबल होगा। और डेट टेबल किसके लिए, सीरीज एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रखूंगा डेट टीबी। टीबी का मतलब है टेबल। सो मैं एक डेट टेबल बनाने जा रहा हूँ। सो आई वांट टू क्रिएट दिस टेबल, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डेक्स फंक्शन है जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर इज अ डेक्स फंक्शन, राइट। एक जो है पावर बीआई की ये है कि बहुत सारे जो फंक्शंस हैं एक्सेल के, वो यहाँ पर काम कर जाते हैं, राइट। और इसका सिंटैक्स काफ़ी मिलता जुलता भी है। तो यहाँ पर आप कैलेंडर को आपने सिलेक्ट किया, अब इसकी ऑप्शंस आपके सामने आ गई कि स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होगी। तो मेरे एक तरीका तो मेरे पास ये है कि यहाँ पर मैं लिख दूँ कि डेट, फॉर एग्जांपल मैंने कैलेंडर की जो पहली डेट है वो साल कौन सा, महीना कौन सा, और यही मेरा फॉर्मेट होना चाहिए। तो डेट मेरे पास ये है, मंथ ये है। तो मैं फिलहाल इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इसको इस्तेमाल कर कि मैं ये चाह रहा हूँ कि
I want to extract the first date from the fact table and the last date of the fact table. So it means the start date will be the first date of the fact table, and the last date, the second date or the end date will be the last date of the fact table. So I want to extract these two dates in order to develop the date table. For this, what we need to do is we need to just use a min function. Min is a function that will calculate and return the lowest value, right, of the range that we provide. So we have the min, and here we want to put the fact date, right? So this will give, now look at the syntax. We have the calendar, then we have the start bracket, and this is another function which is known as the min. Now this represent of min function is the date column of fact table. So fact tb1 is the name of the table, and whereas date is the column of, and the date is the column, right? So this is my first date. Now put the comma, and we have the max function here. So max function will return the maximum value from the date column of the fact table. So fact, just write fact, and we have the fact one date, and close it. So max function is closed here, and we have put an extra parenthesis in order to close the calendar function. So once I just enter or click this symbol, it will create another table which is known as the date table. So I have the date table, and we have only one date. So if I click, if I go the table view, you will see we have the date table. So look at here, we have the date. Now, as I have told you that we have to extend this model, right, either by the calculated column or by calculated measures. So in this column, if I want to make an analysis, early analysis, I need some columns here. So how I can create the calculated column here in this particular table? So what I will doing, I will select date table, right? I have this, and here select the date column, right? Any of the value of this. Then we have the column tools, right? Column tools, table tools. So we want to create another column, the calculated column. So new is press new column, right? Now I have the column. So let me get, I want to, so this is air. I want to extract air, a column for air. So air, and the fact, not the fact, we have the date TB, and we have the date. So what this function will do, it will extract the air this date. So if I click or press click this one, or this column will be populated with right. So I need to change this has to be here. So YEAR here, and click enter, right? So that is one thing. So if you want to have another instance, for example, I want to have month, right? So new column once again, right? And we have the month over here. So equal to the month, right? And again, we have the date, TB date. This will give the number of month.
Okay, this extract the month of this date. Now, this is the numeric value. First represent January, second represent February, and so forth. If I click that, so we have 1 till 12. So these are the numbers that represent. The first value is for January, second value is for February, and so forth. So I can have numbers, but not the text value that correspond to 1, 2, 3. So in that case, I need to create another calculated column, which is very simple with the help of an if function. So what I will be doing, I will calculate with new column. So another column, new column. Okay, fine. So I have the new column here. So let me write the month name. So this is the month name is equal to. Now I have to write the if function here. एक सवाल जो आप पूछ सकते हैं कि मैं ये यहाँ पर सेकंड रो के अंदर कैसे आ गया, तो इसके लिए है ऑल्ट एंटर। तो जब भी आपने अगली लाइन पे जाना हो तो प्रेस करेंगे ऑल्ट एंटर, तो ऑल्ट एंटर करने से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर एक सिंपल सा है, वो है इफ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मंथ है इसका डेट का, डेट टीबी का जो मंथ है इज इक्वल टू 1 है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर आ जाए जनवरी, राइट, कॉमा। अगर मैं ये कहूँ कि इफ डेट टीबी मंथ इज इक्वल टू 2, तो क्या आना चाहिए, फरवरी आना चाहिए, राइट, कॉमा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका आसान सा एक तरीका ये है, इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कर लें, और यहाँ पर आके एक यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल वी कर दें। ये मैंने कंट्रोल वी किया, अब इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 3, और इसको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल मार्च। मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मार्च। इसी तरीके से दिस इज फॉर अप्रैल, APR, राइट, हियर। सो मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा मई, इसको मैं कर दूंगा जून, राइट, और इसको मैं फिर दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाके मैंने कर दिया कंट्रोल वी। सो 1 2 3, ठीक है जी। तो अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 फॉर मार्च, 5 फॉर मई, 6 फॉर 7 फॉर जुलाई, right, JUL. Then I have August, July, August, right, 8 for August, 9 for September, right, 10 for October, and we have November, और ये 11 आ गया। और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दिसंबर, राइट, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैंने डिलीट कर दिया। और अब मैंने सिर्फ क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स क्लोज, ब्रैकेट्स आप बंद करते जाएं तो जितनी आपके पास हैं, और ये मेरे पास अब ये जो मंथ का जो वैल्यूज थी ये अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन इट, और आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मंथ, तो वी हैव मंथ नेम जनवरी, फरवरी, और ये इस कैलकुलेटेड, ये कोड है इस कैलकुलेटेड कॉलम, राइट। सो अब मेरे पास
एक चौथा टेबल बन चुका हुआ है। मैं क्वार्टर की भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्वार्टर की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ईयर मंथ की यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मेरे पास अब ये एक टेबल बन चुका हुआ है। अब मैं इसकी रिलेशन कायम कर देता हूँ। ये मेरे पास डेट टेबल आ गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ और इसको ओके फॉर एग्जांपल अब मैं डेट को, अब इस डेट टेबल के अंदर डेट की एक ही वैल्यू होगी, जब यहाँ पर मल्टीपल डेट हो सकती हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लिया। सो अब मेरे पास एक और टेबल था डेट का, जो कि मैंने इसके साथ टेबल कलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जो बेसिक रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पर बन चुकी हुई हैं। अब मैं अगर यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहूँ, मैं बड़े आराम के साथ निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, अब मुझे एक टेबल जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब ये देख कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से प्रोडक्ट को क्लिक किया और इसको यहाँ पर लेकर आ गया, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में ये मेरे पास टेबल यहाँ पर बन रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये टेबल आ गया। और मुझे अगर ये क्वांटिटी देखनी है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या कितनी सोल्ड आउट, तो मेरे पास फैक्ट टेबल 1 है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ए की इतनी क्वांटिटी बिकी, प्रोडक्ट बी की इतनी बिकी, प्रोडक्ट सी की इतनी बिकी, एंड सो एंड सो, राइट। इसको बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, ये फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा। फिर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। मेरे पास अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये कौन से शहर में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे पास एक तरीका ये भी है। देखिए सिटी का टेबल है, सिटी टेबल को मैं यहाँ पर उठाऊँ, यहाँ पर लेकर आऊँ, तो मेरे पास ये जो आ रही वैल्यू है ये टेबल फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्लाइस है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू ए स्लाइसर। तो ये मेरे पास सिटी है, इस्लामाबाद है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर फैसला देखना चाहता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर क्या सारी सूरत हाल थी, तो फैसलाबाद के अंदर प्रोडक्ट इतना बिका, इतना बिका। और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल डेट टेबल में जाके अगर मैं साल यहाँ पर निकाल दूँ, ये मेरे पास साल है, साल को मैं इधर लेकर आ गया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, और इसको स्लाइसर बना दूँ, ये मेरे स्लाइसर का है। तो मैंने सिर्फ क्या करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आना है और इसको यहाँ से चेंज करते हैं इनटू स्लाइसर। ये मैंने स्लाइसर किया, तो ये डिफरेंट जो डेट की जो वैल्यूज होती हैं ये जरा डिफरेंट फॉर्म्स में आती हैं। तो ये चीज़ आ गई। तो इसको मुझे चेंज करने के लिए, इस फॉर्मेट में लाने के लिए, ये मेरे पास है लिस्ट ड्रॉप डाउन बिटवीन, जो भी है फिलहाल मैं इसको लिस्ट ले लेता हूँ। तो पता चल रहा है कि फैसलाबाद के अंदर ये ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। अगर सिर्फ मुझे 2019 का देखना है तो 2019 की ये थी, 2020 की ये थी और 2021 की ये थी। और इसी तरीके से अगर मंथ को भी मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँ, राइट, तो यहाँ पर मेरे पास नॉट दिस वन, राइट, मैं मंथ नेम को लेकर आना चाह रहा हूँ। अब जब मैं मंथ नेम को लेकर आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसको स्लाइसर बना लेता हूँ तो ये मेरे पास स्लाइसर बन रहा है, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च में आना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो सॉर्टिंग हुई है वो ऑर्डर हुई है। इसको भी अभी हम लोग थोड़ी देर में ठीक करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम ये देखना चाहें कि जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 2021 के किस साल में कितनी थी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे जनवरी में देखनी है तो जैन को मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये वो डेटा है जो कि मुझे बता रहा है कि 2021 में फैसलाबाद के अंदर जनवरी के महीने में जो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस थी क्वांटिटी वाइज, वो सारे क्या चीज़ें थी। तो ये हमारे पास एक बेसिक आइडिया है जो कि यहाँ पर गया। अच्छा जी, एक काम और कर लेते हैं कि इसको भी देखते हैं कि ये अगर इसकी सॉर्टिंग हमें चेक सही करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको टेबल व्यू के अंदर जाना पड़ेगा। टेबल व्यू के अंदर चले गए, अब ये मेरे पास मंथ नेम है, तो मंथ नेम को आप क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। आपने इसको सिलेक्ट किया के बाद यहाँ पर देखें कॉलम टूल्स के अंदर आपके पास सॉर्ट का एक है, तो आपने सॉर्ट करना है ये कॉलम, ठीक है, सॉर्ट करना है ये कॉलम बाय विद मंथ, ये जो मंथ है,
मंथ के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपने इसको मंथ को क्लिक कर दिया सॉर्ट, ठीक है। इस कॉलम को सॉर्ट करना है बाय मंथ, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो अब ये वर्किंग ऑन इट। और अब जब भी कहीं पर भी जब हम इसको पुट करेंगे किसी रिपोर्ट के अंदर, किसी डैशबोर्ड के अंदर या किसी भी विजुअलाइजेशन के अंदर, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हमारे पास ये देखें जनवरी फरवरी हमारे पास मार्च आ गई। सो ये फिलहाल बेसिक आइडिया है जो हमारी जो बेस अब हमारी बन चुकी है। कैन अंडरस्टैंड के मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से हम लोग डेटा मॉडल कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद डेटा मॉडल को अगर हमें एक्सटेंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। दो कैलकुलेटेड कॉलम के जरिए, अभी तक हमने सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलम किए, और अब हम थोड़ी देर में कैलकुलेटेड मैयर्स की तरफ भी जाएंगे, और फिर इसको किस तरीके से अगर हम लोगों ने पोर्ट्रे करना है, राइट। तो इसी तरीके से अगर मुझे इस विजुअलाइजेशन को चेंज करना हो इनटू इस टेबल को फॉर एग्जांपल चार्ट की सूरत के अंदर, कॉलम क्लस्टर चार्ट, तो यहाँ पर देखें इसको मैंने और सिलेक्ट करने के बाद ये जो विजुअलाइजेशन है, इनमें से जो भी विजुअलाइजेशन मुझे आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको कस्टर्ड कॉलम चार्ट चाहिए, तो इसको क्लिक कर दें। वंस यू क्लिक दैट यू विल सी दिस इज चेंज टू द क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, और इस तरह से ये आपकी वैल्यूज जो हैं वो वैल्यूज हैं आपको चेंज होती नजर आएंगी, राइट। So I think it's 7:07 by my watch. What we can do, Harun, if you are here, can we take a break, namaz break? Yes, I think we can take a 10 minutes prayer break. I think 10 minutes में कराची भी cover हो जाएगा और लाहौर भी, और उसके बाद हम start कर देंगे. Okay? Right, right. 10 minutes. So it's a 10 minutes break, and we'll resume in about 10 minutes. Right.
Okay, जी, fine. I'm back. Yeah, Arun, are you here? Okay, Khurram, are you back? Shall we resume I'm the back. session? Yes, we can. Okay, should we resume? जी जी बिल्कुल sure. Okay, fine, जी. Let's begin. Okay. अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया था कि डेटा सोर्सेज कनेक्ट कैसे करते हैं. How do we connect from different data sources and putting them into a model and creating a relationship among different data sources, the different files that we have, and how we can extend the data models, the files that we have, right? Or on the basis of that, we have just created this, right? That can be have slicers. We have Faisalabad, Islamabad, etc., right? So that is the basic idea. Now, if you look at this table, we have three different tables here. We have, let me close it. We have the city table, right? Have the product information, right? I have the price. Here I have the margin. My objective is that I want to analyze sales, right? So the sales has to be calculated by multiplying quantity with the price. I have price in another table, right? The price value in the product table. I don't have this price in my fact table. If I look at the fact table, अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ सिटी प्रोडक्ट का क्वांटिटी है. यहाँ पर मेरे पास कोई भी प्राइस की वैल्यू नहीं है. So what I need to do? Luckily, I have the relational data model here. Means that all these tables are related with each other somehow. So I can extract the values of price, right, and use it in here as well, right? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोडक्ट के टेबल के अंदर दो तरीके हैं इसके. ठीक है, मैं दूसरा तरीका अभी नहीं जा रहा. मैं सिर्फ एक जो सिंपल तरीका है मैं उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है मुझे चीज़ों को सिंपल ही रखना चाहिए. तो अब मुझे क्या करना है, जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि मुझे किसी तरीके से इस टेबल के अंदर आई वांट टू हैव अ प्राइस वैल्यू, another column, right, of price in this column against each product value. तो इसके लिए what I can create another calculated column, right? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, new column,
right? So this new column after selecting any other column from table. So it allows me to create another column, right? So, and the name of the column is the price, right? Price. Now, अब होगा क्या? What will happen is that this value will be replaced by price, but I want to have the price of the product 3 right in front of here. So since the data model is related, I can use a text function which is known as related. So related is a function, right? So it can extract the value from different table if the two tables are related to each other, and there has to be a relationship of one. So before the break, I tried to explain what is the relationship of 1 to many. So now I want to extract the price from the table, and since fact table and the product table are related to each other, I can use a related DEX function, and I just need to put the price or the name of, now look at here, related what? The product table. So since the fact table is related to, I can use the related function, and what it does, I want to extract price from the product table. So when I click this one or press enter, it will get all the values of the prices. So the product of 3 has a price equal to 20. So we can verify that from here. So if you look at here, we have the product table, and that is uh, uh, 3. So product code is 3, the price is 20, right? So this is how it goes. So go to the fact table. Now, अब आप ये देखें कि I have another column right over here. So I get the price value for each of the product. Now I want the sales. How can I get the sales? I have two options over here. Either I can create a calculated measure, or I can create a calculated column. So let me create calculated column plus the calculated measure. So let me have the new column here. This is the calculated column, and this is what I call it a sales. Now sales is calculated by multiply by price. So I can do that with this is the quantity, or the right is the fact table, right? So I want the quantity from the fact table and multiplied it with the price, and the price is actually, again, since it is now in the fact table, so this is what it is, right? The fact table multiplied by fact table price, this will give us the sales, right? So this, so we have, for this transaction, the sales amount is 160, right? So this is one way, and this is what we call uh, the calculated column, right? So we have created column value for each transaction. Now we will develop another calculated measure. Now measure means that I want to create an aggregation. Aggregation, for example, maybe the sum of all these values, the total sales. So I want to create a total sales. This column
calculated column will only calculate the sales value for one row. So now what I want is I want to create a calculated measures which is an aggregation, which is the summarization, right? And which is the sum of total sales. And for this, I can create a column created measure in this table. So how can I do that? I have two options. Just click this one. आप कहाँ चले जाएं? पहले आप यहाँ पर चले जाएं, ये आपका कैनवस पे आ गए और यहाँ पर जाके आपने फैक्ट टेबल को क्लिक किया। जब आपने फैक्ट टेबल को क्लिक किया तो यहाँ पर देखें अब आपके पास कैलकुलेशंस हैं और इन कैलकुलेशंस में आपके पास न्यू कॉलम, क्विक मेजर्स, न्यू मेजर्स। तो चाहे आप यहाँ से क्लिक कर दें या यहाँ पर फैक्ट टेबल पे रहते हुए क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेजर्स, तो चाहे आप यहाँ से कर लें चाहे आप वहाँ से कर लें। तो मैं एक न्यू मेजर्स बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने न्यू मेजर्स यहाँ पर क्लिक किया और ये न्यू मेजर्स नाम बनेगी फैक्ट टेबल के अंदर बनेगी और इसका जो नाम होगा उसको हम रखेंगे टोटल सेल्स। तो यहाँ पर देखें ये मेजर आ गई और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स मैं करना चाह रहा हूँ सम, और ये सम किसका करना चाह रहा हूँ, जो कि फैक्ट टेबल का, जो फैक्ट टेबल की जो सेल्स है, दिस इज द फैक्ट टेबल टोटल सेल्स। दिस विल प्रोवाइड मी द टोटल सेल ऑफ द एंटायर कॉलम। तो मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास सब क्या आ गई, ये टोटल सेल्स आ गई, राइट। तो अब अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि ये मेरी अब जो टोटल सेल्स है वो क्या है, वो मेरी टोटल सेल्स वो ये है। विजुअलाइजेशन मुझे चेंज करनी है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये कार्ड को अगर मैं क्लिक करूँगा तो कार्ड में सिर्फ इसकी जो न्यूमेरिकल, सो 279,000 के इज द टोटल सेल्स ऑफ दिस डेटा सेट, हमारे पास सैम्पल डेटा सेट है। तो ये मेरे पास अब क्या हो गया, ये मेरे पास एक मेजर क्रिएट हो गई। तो कैलकुलेटेड कॉलम का भी पता चल गया आपको, कैलकुलेटेड मेजर का भी पता चल गया। ओके, अब यहाँ पर अब हम एक और काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो काम जा रहे हैं कि हम अपना एक एनालिसिस रन करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने ये शीट आपको दिखाई थी, ये बेसिक शीट, इसमें क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट है, सेल्स बाय प्रोडक्ट है। अगर मुझे इस किस्म के काम करने हैं, अभी तो यहाँ पर देखें प्रॉफिट भी आ गया, तो प्रॉफिट के लिए भी मैं यही काम कर सकता हूँ। अब प्रॉफिट की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी मैं लगे हाथ यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या, मेरे पास ये फैक्ट टेबल है और इस फैक्ट टेबल के अंदर जिस तरीके से मैं क्या लेकर आया था, प्राइस को लेकर आया था, ये वाला नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस टेबल के अंदर मेरे पास क्या आ गई थी, प्राइस आ गई थी। यहाँ पर देखिए मेरे पास प्राइस आ गई और सेल आ गई। अब अगर मुझे प्रॉफिट भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैं अगर न्यू कॉलम यहाँ पर बना देता हूँ, तो न्यू कॉलम करने के लिए पहले मुझे प्रॉफिट यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से प्रॉफिट मार्जिन बना लेता हूँ। जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कितना था, तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ गया, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन और इज इक्वल टू अगेन रिलेटेड देंगे और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट जो आपके मार्जिन है, ये आपका आ गया। इसको आपने ये किया तो अब आपके पास ये क्या हो गया, हर प्रोडक्ट उसका प्रॉफिट मार्जिन था वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं एक नया कॉलम और बना लूँ और नया कॉलम के बाद यहाँ पर मैं एक और कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर लूँ, कॉलम है आपका प्रॉफिट। तो ये मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इस चीज़ का, आपकी पर सेल का। तो इट्स वेरी सिंपल कि जो आपकी सेल्स हैं, राइट, फैक्ट टेबल सेल्स, इफेक्ट
आपकी जो सेल्स हैं, नाउ आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आपने करना है प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो यहाँ पर आपके पास फैक्ट टेबल के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम आ चुका है, और अब आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की भी कैलकुलेशन की। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सटेंड your data model or a particular table by inserting different calculated columns. Again, the objective is that what is your analysis objective? If you have, if your objective is to analyze profit, right, then you need to create a column for that, or you need to create a measures for that, right? One last thing is, for all the measures, it is recommended that we should have a separate table for all the measures. And for doing this, what you can click home, right? You can click home, you can use this data and select this one, enter data. This will allow you empty table, let it be measures. So all measures will be placed right over here as we have in the fact table. जिस तरह फैक्ट टेबल के अंदर हम लोगों ने एक मेजर बनाई थी, इट इज रिकमेंडेड कि जो मेजर्स का एक सेपरेट टेबल हो। अगर मैं इसको लोड कर दूं तो यहाँ पर देखें, इस जगह के ऊपर एक एम्प्टी टेबल आ जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, मेजर्स का होगा। तो मैं अपनी तमाम कहाँ बना सकता हूँ, मैं अपनी मेजर्स यहाँ पर बना सकता हूँ, राइट। तो ये देखिए मेरे पास एक ये आ गया, और इस जगह पे इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैं अगर ये दो मेजर्स यहाँ पर बना लूँ, एक न्यू मेजर्स मैंने लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव द टी सेल्स। अब जरा देखें, टी सेल्स मुझे करनी है, टी सेल्स, और इसके बाद अगेन आंसर इज वेरी सिंपल, सम मुझे करना है इसका। तो फैक्ट टेबल्स की जो सेल्स हैं, फैक्ट टीवी 1 की सेल्स, तो अब मेरे पास टी सेल्स कहाँ पर आ जाएगी, ये मेजर्स मेरी बन गई, और ये मेजर्स कहाँ पर आ जाएगी, इस जगह, राइट। अब इस मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए मैं मजीद मेजर्स बनाऊंगा जो कि मेरे डिफरेंट एनालिसिस के अंदर काम आएगी। एक जल्दी से और बना लें। अब मैं यहाँ पर न्यू मेजर्स क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको टीम प्रॉफिट। अच्छा, एक बात इन द मीन टाइम, जब तक कि मैं प्रॉफिट के मेजर बना रहा हूँ, आपको एक असाइनमेंट भी मैं साथ साथ दे रहा हूँ कि आपने जितने भी कैलकुलेशंस जो मैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, व्हाट यू नीड टू क्रिएट ऑल विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रॉफिट, so टी प्रॉफिट, राइट। तो ये मैंने एक बेस मेजर बना दी है, और इस मेजर से जो मजीद अब हम अपनी मेजर्स बनाएंगे वो इनको इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। मैं सेल्स के हिसाब से बनाऊंगा, आपने प्रॉफिट के हिसाब से बनानी है अपनी असाइनमेंट के लिए या अपने होमवर्क के लिए। तो ये मेरे पास फैक्ट टेबल का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट है और ये इसकी टोटल सेल्स आ गई। तो ये मेरे पास अब दो मेजर्स बन मेजर के टेबल के अंदर, और इसका फ़ायदा मुझे ये होगा, एक एम्प्टी टेबल के अंदर जब मैं ये मेजर्स बनाऊंगा तो जो इसकी मेंटेनेंस आसान हो जाएगी, और इसकी जो नेविगेशन है वो आसान हो जाएगी। मुझे पता है कि कौन कौन से मेजर्स किस टेबल्स के अंदर पड़ी हुई है, पहले मुझे ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि मेजर्स के टेबल हैं तो फौरी तौर पे मुझे पता है कि कौन सा चीज़ यहाँ पर है। अब बहुत आसानी के साथ हम अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मुझे ये चेक करना हो, राइट, कि मिसाल के तौर पर अब मुझे ये मेरे पास था क्वांटिटी बाय सेल्स, अगर मैं यहाँ पर सेल्स भी लेकर आता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखिए मैं इस सेल्स को अब यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेल्स को ड्रैग करके। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये ड्रैग, एक तो आसान तरीका आपको बता दिया, मेरे पास ये क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट का जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। अब जब मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये जो विजुअलाइजेशन के अंदर ये अब मेरे पास चीज़ें आ गई। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट को दिखा रहा है, ये एक्सेस के ऊपर दिखा रहा है,
इसी तरीके से जो क्वांटिटी है, ये वैल्यूज हैं, वो कहाँ दिखा रहा है, वो इस जगह के ऊपर दिखा रहा है। अब अगर मुझे एक एनालिसिस करना हो सेल्स वर्सेस क्वांटिटी, ठीक है, तो उसके लिए मुझे मेरे पास टोटल सेल्स ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको ड्रैग करके इस जगह पे, अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये सेल्स भी आ गई और ये मेरे पास क्या आ गई, आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी और ये सेल्स, ये दोनों इसी विजुअलाइजेशन के अंदर आ गई। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि व्हेन एवर वी हैव टू मेजर्स ऑफ ड्रास्टिक डिफरेंस, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो क्वांटिटी है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। Whenever there is a case, we should have a combo chart. तो हमें कोई ना कोई combo chart यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो combo chart बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर देखें, इस visualization के अंदर मुझे इसी chart को change करना है into combo chart। तो इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये मेरे पास, तो ये मेरे पास ट्रस्टेड कॉलम चार्ट है, इससे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखें वो मुझसे कह रहा है कि जो लाइन वैल्यूज़ है, ये प्रोडक्ट आ गया, ये कॉलम वैल्यूज़ हैं और साथ ये बता रहा है कि कौन सी लाइन वैल्यूज़। तो मुझे क्वांटिटी को लाइन वैल्यूज़ के अंदर करना है, इसको ड्रैग करके मैं कहाँ पर ले जाऊँगा, यहाँ पर ले जाऊँगा। तो आई कैन हैव ये वाला जो चार्ट है जो कि कॉलम क्लस्टर चार्ट था, नाउ इट्स अ कॉम्बो चार्ट। तो इस तरीके से हम इसको जो चार्ट की जो विजुअल इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से अब अगर मुझे ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक स्लाइसर था, अब इसी को मैंने चेंज करना है फॉर एग्जांपल सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे अब यहाँ पर 2019, 2020 और 2021 इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर सेल्स देखनी है या मुझे प्रॉफिट देखना है। ये क्योंकि मेरे पास ये एक ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ था, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इनटू ए टेबल। तो ये मेरे पास टेबल है, यहाँ पर देखें स्लाइसर के बिल्कुल साथ यहाँ पर टेबल है। इस टेबल को मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास टेबल की फॉर्म बन गई और यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ हैं। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर टोटल सेल्स को ड्रैग के आगे लेके चले जाना। तो जब मैं इसको आगे लेके चला जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ गई, ये टोटल सेल्स आ गई कि जनवरी के अंदर जितनी भी टोटल सेल्स थी रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, यानी कि 2019, 2020 और 21, इन 3 सालों के अंदर जो जनवरी की सेल्स थी वो कितनी थी, वो इतनी थी। इसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट को भी उठा के इस जगह पे ले जाऊं तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट की आ गई। अगर इसी तरीके से अगर आप क्वांटिटी को भी उठा के यहाँ पर ले जाएं तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। सो वी हैव द जनवरी की जो टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट और ये सारे मामला। लेकिन अगर आपको अब ये 19 की क्या वैल्यूज थी, तो हमारे पास 2019 की जो हमारे पास जो सेल्स थी, टोटल सेल्स इतनी थी, टोटल प्रॉफिट इतनी थी, क्वांटिटी इतनी थी, और ये जो स्लाइसर है इन दोनों के ऊपर टेबल है। तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ जो भी एनालिसिस का करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, राइट। सो इसी तरीके से 2020 और ये, और अगर आप एक काम और भी करना चाहें, फॉर एग्जांपल मुझे ये जो साल है, ठीक है, ये जो मेरे पास है, इसको भी मुझे ये देखना है कि जो ईयरली जो सेल्स हैं या प्रॉफिट है वो क्या है। तो इसके लिए आप इस मेजर को चेंज, इस विजुअलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये स्लाइसर है और फॉर एग्जांपल मुझे इसको इस फॉर्म में दिखाना है, तो ये साल आ गए और यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, राइट, और इसी तरीके से मैं अगर क्वांटिटी को भी यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो क्वांटिटी भी अगर मैं यहाँ पर लेकर आ गया, लेकिन अब क्वांटिटी के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम एक प्रोडक्ट का स्लाइसर यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये जो मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल है, तो यहाँ पर देख ये प्रोडक्ट का टेबल है। इस प्रोडक्ट के टेबल से ये मैंने प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पर रखा, राइट, और इसका मैंने क्या बना दिया, स्लाइसर बना दिया। तो अब मुझे ये मेरे पास ये प्रोडक्ट ए की जो क्वांटिटी वो ये है, प्रोडक्ट
2019 के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट ए था उसकी टोटल सेल्स कितनी थी, तो एक ये भी आपके पास समरी हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के। तो विजुअलाइजेशन इसको कैसे करना है, ये वाला जो पार्ट था इस केस के अंदर, ये जो आप एट द एंड ऑफ द सेशन ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ये कैसे होता है, ये अब आप आसानी के साथ बना लेंगे, आसानी के साथ बना लेंगे, राइट। तो ये आपने री क्रिएट करना है, लेकिन एम्फेसिस होगा वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फैसलाबाद ये जो आपके पास स्लाइसेस हैं, इन स्लाइसेस को आप जिस तरीके से भी देखना चाहते हैं बहुत आराम से यहाँ पर डाल भी सकते हैं और अपने इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो डेटा की मदद से इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन बनाना वो बहुत आसान है और क्वाइट इजी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट था वो हमारे पास आ गया। तो विजुअलाइजेशन एक अलहदा फील्ड है, नॉट इन अ फील्ड के ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप टेबलर फॉर्म में दिखाना चाहें तो टेबलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, आप इस तरीके से दिखाना चाहें इस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे क्वांटिटी और ये जो टी सेल्स है, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि ईयरली सेल्स दिखानी है। अब ये दिखानी है किसके अंदर, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको पाई चार्ट किया तो ये मेरे पास अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पाई चार्ट में आ गई। तो और ये बड़े आसानी के साथ अगेन ये फिल्टर इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि हम इसकी जो कनेक्टिविटी वो चेंज ना कर दें। तो ये तो मेरे पास एक तरीका हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो हमने बेसिक आइडिया लिया था कि किस तरीके से डेटा मॉडल बना के हम लोगों ने ये चार्ट्स कैसे बनते हैं, टेबलर फॉर्म के अंदर कैसे आ रहा है, स्लाइसर कैसे लगते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया। आपने अब इस किस्म की एक जो चीज़ है वो आपने डेवलप करनी है। ये अब काम बहुत आसान है, सिर्फ आपने ये करना है। और आपको बताता चलूँ साथ ही साथ ताकि आपको इस किस्म की जो विजुअलाइजेशन करने में आसानी हो, और वो ये है कि अगर मुझे इसके अंदर कोई जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करना, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके साथ बॉक्स लग जाए, तो यहाँ पर देखें ये विजुअलाइजेशन के अंदर आपको ये तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही। ठीक है, ये तो आपकी वैल्यूज़ के लिए, लेकिन ये जो है दैट इज़ फॉर फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा कलर्स हैं, वाई एक्सिस हैं, लेजेंड हैं, मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिलहाल फॉर एग्जांपल मुझे बॉर्डर बनाने थे, तो ये मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना दिया, तो इसको सिर्फ ऑन करना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से अगर मुझे इनकी जो वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो कॉलम हेडर्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर मुझे बड़ा करना है तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने क्लिक किया और ये जो कॉलम हेडर्स हैं उसको मैंने क्लिक किया, और वैल्यूज़ को अगर मुझे बड़ा करना है, जो टेक्स्ट साइज़ है फॉर एग्जांपल मुझे 12 करना है। ठीक है, जो मुझे वैल्यूज़ हैं वो मुझे क्या करनी है, इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कॉलम हेडर की ऑप्शन को ख़त्म किया और यहाँ से मैं वैल्यूज़ की तरफ आ गया। तो वैल्यूज़ मेरे पास हैं और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इनका जो टेक्स्ट साइज़ है कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, वॉट एवर। तो यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू, अब ये करने से आपकी जो विजुअलाइजेशन है ये थोड़ी सी चेंज होगी, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपने इसको क्या कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया। तो दिस इज हाउ इट गो, राइट। तो इन चीज़ों को आप ड्रैग करके बहुत आसानी के साथ अगर एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी आपको पता चल गया। तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं इन चीज़ों को फॉर्मेट करने के लिए। तो आप बहुत आसानी के साथ इनकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो मैं अब जल्दी जो दूसरी ऑप्शंस हैं वो आता हूँ। और अब हमने ये चेक
जो MTD सेल्स, QTD सेल्स और जो YTD सेल्स की जो कैलकुलेशंस हैं, अगर हमें करना है तो वो हमें किस तरह करनी है। तो इस हम क्या करेंगे, हम कुछ मेजर्स क्रिएट करेंगे, राइट। और ये बड़ी सिंपल सी मेजर्स हैं, डेक्स फंक्शंस हैं। ये देखें मेजर्स का मेरे पास है और मैं इसके लिए एक नया कैनवस यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखें पेज 1 है, तो यहाँ प्लस को क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नया कैनवस आ जाएगा इसी शीट के अंदर। ये मेरे पास आ गया और अब यहाँ पर एक मैं नई मेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ, जिसकी मदद से मुझे कैलकुलेशन करनी है MTD सेल्स, QTD सेल्स और YTD सेल्स। एक फंक्शन है, तो 3 फंक्शंस हैं, तो इसके लिए मेजर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर न्यू मेजर्स लिखा, ठीक है। अब न्यू मेजर्स के लिए करने के बाद यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल करनी है MTD सेल्स। ये मेरे पास MTD सेल्स आ गई। So I want to create an MTD sales, right? अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके लिए मेरे पास मुझे 2 जो फंक्शन इस्तेमाल करना है। वन इज नोन एज very versatile function which is known as calculate. So calculate is just like a sum if function, right? जिस तरीके से एक्सेल के अंदर sum if function है, उसी तरीके से ये हमारा फंक्शन। इसके अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम what we want to sum, what we want to do, right? What we want to calculate. So हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टी सेल्स के अंदर से। तो मेरे पास क्या है, टी सेल्स है। सो टी सेल्स की वैल्यू, तो टी सेल्स के एग्रीगेट है। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन एवर यू हैव टू use the calculate function, the thing is the expression, and that expression is some sort of an aggregation. और टी सेल्स हमारी क्या है, हम लोगों ने सम किया हुआ, तो सम of T sales, sum of sales actually equal to T sales. So T sales is an aggregation. So इस aggregation के अंदर से मुझे क्या चीज कैलकुलेट करनी, ठीक है। अब उसके लिए तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर से जो मुझे कैलकुलेट करना है, वो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है MTD, डेट्स MTD फंक्शन, ठीक है। डेट्स डेट MTD, so dates MTD function. So dates MTD function क्या करेगा, ये जो मेरे पास वैल्यूज हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से करेगा कि जो वैल्यूज हैं MTD की, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। और डेट्स MTD का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, वो हमारे डेट टेबल्स की डेट है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेट्स टीबी, डेट टीबी की जो डेट है, इसको आपने ये किया तो मेरे पास ये डेट्स MTD का फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया। और इसके बाद ये चीज क्या होगी, मैंने कैलकुलेट का फंक्शन, तो कैलकुलेट टी सेल्स डेट्स MTD। सो व्हाट वी वांट टू डू विद द टी सेल्स, हम इस टी सेल्स को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं डेट्स, ये इट विल डन ऑटोमेटिक, so we don't need to do any other thing. So that is the beauty of this text function. अच्छा, अब इसी तरीके से अब अगर मुझे क्वार्टर QTD सेल्स या क्वार्टर टू डेट सेल्स करना है, तो उसके लिए भी सेम फंक्शन है, सिर्फ क्या होगा, डेट्स MTD की जगह पे डेट्स QTD आ जाएगा। कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर न्यू मेजर किया, और न्यू मेजर करने के बाद यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया, और इस जगह पे मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको मैंने Q करना है, और यहाँ पर डेट्स MTD की जगह पे रेस्ट इज द सेम, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये QTD सेल्स आ जाएगा। अब ये QTD सेल्स होती क्या है, MTD सेल्स क्या होती
अच्छा ये हो गया। अब इसी तरीके से YTD सेल्स भी हम जल्दी से कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यू मईयर्स हम लोगों ने किया, ठीक है, और यहाँ पर देखें MTD सेल्स और KTD सेल्स के मईयर्स ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये मैं न्यू मईयर्स के लिए मैंने कंट्रोल की, दोबारा मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने क्या कर दिया YTD सेल्स, ये YTD आ गया। और इस MTD की जगह पे मुझे क्या करना है, YTD सेल्स करना है, सेल्स, राइट। अब मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, तीनों मईयर्स यहाँ पर बन चुकी हैं, राइट। सो कैलकुलेट टी सेल्स के अंदर से डेट्स YTD MTD, एक जल्दी से एक विजुअलाइजेशन कर लें, टेबल के फॉर्म में कर लें, ठीक है। मैंने टेबल्स को क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ी देर में टेबल बन जाएगा और टेबल्स के अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से डेट्स चाहिए, ठीक है। सो आई वांट टू हैव डेट्स फ्रॉम द डेट टेबल। ये मेरे पास डेट आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द फैक्ट टेबल टिल द लास्ट वैल्यू, यहाँ से मैंने डेट उठाई और इसके बाद मैं अब सिर्फ सिंपली क्या करना है, जहाँ पर मैंने टी सेल्स भी कर दी, तो टी सेल्स मुझे क्या क्या दिखाएगा कि एंड अच्छा ठीक, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर ले गया, ठीक है। ये मेरे पास टोटल सेल्स आ गई। ये मुझे बता रहा है कि किस दिन को कितनी सेल्स थी, राइट, किस दिन को कितनी सेल्स थी। अब अगर मैं MTD सेल्स उठा के यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे अब ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेरे पास 420 सेल्स थी यकम जनवरी 2029 को। सेकंड को मेरे पास कितनी थी, 1 MTD सेल्स। ये जो वैल्यूज है कि 2 तारीख को मेरी जो टोटल सेल्स थी क्या है, इन दोनों का सम होगा। इसी तरीके से जो 3 जनवरी को सेल्स थी वो कितनी थी, 270 थी। इन तीनों का जो जब आप जमा करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 815। एंड सिमिलरली इस तरीके से अगर आपको QTD सेल्स की बात करते हैं तो QTD सेल्स को भी यहाँ पर ले आए, इस सेल्स को भी यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये मेरे पास YTD सेल्स की भी आ गई। तो मेरे पास ये MTD सेल्स है। क्वार्टरली सेल्स का मतलब है कि एक क्वार्टर की। तो फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 3 महीनों का एक क्वार्टर है, तो ये मार्च तक चलेगा। तो ये 420 का ये सम आ रहा है। जैसे कि अब हम यहाँ से चौथे महीने में जाएंगे तो यहाँ पर देखें 31 मार्च को एक क्वार्टर खत्म हुआ, दैट इज द QTD सेल्स ऑफ Q1, ठीक है। और जैसे ही आपका अप्रैल शुरू हुआ ये कहानी दोबारा से शुरू होगी, राइट। इसी तरीके से अगर हम मंथ की बात करते हैं तो मंथ के अंदर जो पहला महीना था हमारे पास वो 420 का चला आ रहा है। तो जैसे ही महीना चेंज होगा, ठीक है, हम यहाँ पर देखें ये आपकी मंथली सेल्स थी, जैसे ही महीना चेंज हुआ तो वापस ये आपका शुरू हो गया। और साल का भी इसी तरीके से है कि 2019 तक ये YTD सेल्स आपको दिखाता चला जा रहा है। और फिर जैसे ही आपका ये चेंज होगा 2019 की जगह पे जब 2020 आएगा, ठीक है, ये आप देखें ये तो ये 12वां महीना शुरू हो गया 2019 का और ये 2000 ज़्यादा ही चला गया जी। अब अगर हम यहाँ पर देखें ये तो 2019 की ये वैल्यू थी और जैसे ही वो चेंज हुआ तो आपकी वैल्यूज भी क्या होगी, तो आपकी चेंज। तो ये इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ एनालिसिस अगर करना चाहें तो ये देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहें कि फॉर एग्जांपल सिटी को उठा के यहाँ पर ले आए और इसी तरीके से इसको मैं फ़िल्टर बना लूँ। ये मैंने फ़िल्टर बनाया, इसको मैंने ड्रैग करके ये किया, फिर यहाँ से अगर ये मेरे अपनी आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ, ये मैंने एयर उठाया, इसको ये किया और फिर इसको यहाँ से इसको चेंज किया इन लिस्ट और इसी तरीके से प्रोडक्ट उठाया और प्रोडक्ट उठाने के बाद मैंने इसको प्रोडक्ट किया और अब इसका मैंने फ़िल्टर बना दिया। तो अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं। अब ये फैसलाबाद है तो फैसलाबाद के हिसाब से आपको ये बता रहा है
कि फैसलाबाद का जो सेल पैटर्न था वो क्या था, कि डेली आपका जो सिलसिला बन रहा था वो क्या था, कि पहली तारीख को ये था, दूसरी को, और फिर इन दिनों के अंदर कोई सेल नहीं, राइट। तो ये आपकी एमटीडी सेल्स के हिसाब से आ गया विद रिस्पेक्ट टू आपका। और अब अगर आपने प्रोडक्ट ए का देखना है तो प्रोडक्ट ए का अगर आप हिसाब किताब देख लें तो प्रोडक्ट ए की जो एमटीडी, वाईटीडी और क्यूटीडी सेल्स है आपके पास ये आ गई। तो इस तरीके से, और अगर आपने दोनों का देखना है, फॉर एग्जाम्पल ए को देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद, तो ये फैसलाबाद पे जो प्रोडक्ट बी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या आ रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो ये आपके पास अब ये आ गया, राइट। एनी क्वेश्चन? So it's question time. जी कोई क्वेश्चन है? I think let's look at the questions dialog box. Not many questions there. Sidra, you can unmute yourself. You were put on unmute. He said Vakas is asking, can we make a searchable drop-down menu if we have huge data? Okay, fine. Okay. There is one limitation with the Power BI slicer, and if we have a column with numeric values, then we can't do that. But if we have a column slicer value which is text based, then it is quite easy. So select the slicer. At the upper right corner you should find, right, click that one and you will see the search, right. We have search and convert it into a drop down list, right. Now you have this. So now you have this. So you can do this. So there is a limitation to the Power BI that if you have a slicer with a, yes, we can have a searchable drop down list, but if it is a numeric value, numeric column value, then we have to do some thing else. We can do that, but it's other way. We need to do something else. We need to develop a logic. Yes, any other question? Gee, there are more questions. There is a question from Ali Abbas. He's saying, what is the purpose of creating separate data table? Can't we add data related measures in fact table? Yes, we can. Yes, we can. Why not? But it is recommended to have an empty table or the separate Maya tables. So it is easy for us because this model is a very simple model, right? And there are very small Mayas, very limited Mayas that we are creating here. So in actual project, we have amount of Mayas that we will be doing. So in order to maintain it properly, and to navigate it properly, it is recommended, right? It is not necessarily that you should have, but it is a best practice that we should have a separate Maya table. I hope that answers. Does it not relate to the size of the overall model? So if you do not have linked tables formed, the size of the entire model will be huge. Okay, one thing is that it is not recommended again to create a calculator. Instead, we should use Mayas, right? Because of the limitation of the time, I use the calculated column more. I only use limited amount of calculated Mayas. For example, instead of doing this thing, for example, look at this table, the fact table, right? So instead of doing all this price, sales, profit margin, instead of doing this, I can only create one Mayas that will do the same thing. For example, I want to create
right? For example, new mergers, that will do the same. So working on it. Okay. Okay. For example, sales total. So I need to change the name. So instead of doing all this stuff, I can use a function known as sum. This is another DAX function, will do the same, but it will do the rows wise calculation. So I need to get the fact table, right? So this is the fact table. So then from the fact table, what column values that uh, I need to have, that is actually the quantity, right? The quantity from the fact table. Then multiply by price, and the price is present in the product table and it is the fact table. So we have to use the related DAX function, and again we have the product price. So instead of doing all this calculated columns thing, I can still use this Maya. So this is a Maya, right? So click and I will have this the total sales, right? So instead of mm, T sales, right? So let me do this thing. Uh, we have this column selected. So in fact, this instead of this, I should have the sales total, right? So look at here, I have the same impact. So yes, whenever we have to develop a calculated column, we can do that, but it is not recommended. It tends to increase the size of data source. So whenever possible, use a Maya. Great, thank you. Right? Khurram, we'll have to hurry up because there's another webinar starting at 8:30. So we'll have to free the portal in another 5 minutes. Very quickly, there are 3 more questions. Masood Ahmed Qureshi is asking, can we link live data, for example, from Internet Stock Exchange data in Power BI? Yes, we can. We can. We have to do something else as well. But yes, we can. Answer is yes. But right now I cannot answer in detail. Okay, all right. So, Masood, if you want to ask this question in detail, you can get in touch with Khurram and he'll probably help you out. Similar question by Amis Lee, who's saying how to attach recurringly updating, which is dynamic database, to the same dashboard. Okay. Well, thing is, ever the okay. Let me rephrase. There are two aspects of the Power BI. One is the desktop where we create these data models, dashboard, and stuff like this, and then we will publish it to the BI service, and we have to have a license for that, right? And there we can schedule a refresh, right? So it may be 5 minutes, it may be 1 hour, it depends on our requirement. So whenever the data is populated or data is, we have live data on that data source, it will already linked up, it will be live data and it will be shown in the report or in the dashboards, right? So we have to set the frequency or set the schedule of the refresh. Whenever the data is appended, the data source is updated, whenever it is refreshed, it will be done automatically. So we need to look into this. I hope that answers. Okay, and the last question from Maria Sheikh is, she's saying, can you also tell us, are there any other functions such as duplicate values, etc., like those in Excel? Duplicate values, you want to remove the duplicate values or you want to highlight? Yeah, I think she's talking about remove duplicates. Okay,
there is one thing which is known as Power Query, right? Power Query is used for data cleaning, and the question refers to the data cleaning aspects. So if you have the data source that have multiple rows of the data, of the same data, you can remove those duplicates from there as well. So it's a tool by which you can do that. So it's very simple. For example, uh, again, we have the data source here. So select one of the table, for example, the product table, right click that, and somewhere here, select, and somewhere here, okay, let me see. Now, here is the edit query. If I click this edit query, right, so this will take me to the data query. We have all the things here, right, remove rows, etc., etc. We have other different, we have merge queries, we have append queries. This is all about data cleaning stuff. You can remove duplicates, you can trim things, you can change settings. There are many things you can do right over here. And once you have done it, you need to close and load, right? Close and apply, or simply close, right? So right now I'm simply closing it. So in Power Query, we can do all this stuff. Yes, another question? I think that's all. Now, Khurram, if you can very quickly explain all these participants about number one, Wakas is asking about your contact details. Number two, about their task for Saturday for their unmoderated session. If you can repeat that, please. Okay, my contact number is my number is 0345 820 9745. So Khurram, if you don't mind, we can add you into the exclusive WhatsApp group for 7 digits. I'm sure it will be a lot of traffic coming your way, but at least people will have access to access to you. Okay. Okay, fine. So fine. since I have your contact, I'll just add you to the group. Okay, fine. And what was the second question? About their assignment or task for Saturday for the unmoderated session. Fine. This is your assignment, right? So what you need to do is you need to develop this sort of dashboard, right? But use a measure, profit, right? So this thing all be profit, and it has to be filtered by product. So we have the quantity by product, sales by products, profit by product. So here in this we have the slicer should be profit of a product, and in the visualization we should have the profits, right? And the MTD and YTD sales, uh, the total sales, instead of total sales, we should have the profit calculations here. Profit, UTD profit, YTD profit, right? So you need to do that. And similarly, you have this. Okay, one more thing we are left with this, how we can do that. If we, Harun, if you can share these files, okay, I will do that. Primarily, the task is that you need to develop these two dashboards, right? For MTD and YTD, it should be the measure is profit. So we have MTD profit, total profit, etc. And in that case, in this dashboard, the city is to be replaced by the profit right here. So quantity by city, and we should have a product over here. So this is the
task for them. Right? Any other question? Any other thing that you want to ask? I think that's all. That's all. Masood is saying that if you can share the files on the screen with them. So, Khurram, you're now added to the WhatsApp group. If you can share these files with them in the WhatsApp group, I think that will be appreciated. Okay, We fine. now have I'll do to that. vacate the portal because the next session is ready. So thank you very Oh, much for joining in. I hope my head is in crude terms eating circles. I'm a little dizzy. It's not easy stuff. You have to sit down, look at it once again, practice and practice and practice, and then you can get the real benefit out of this. But I think all of you must have enjoyed it. All of you must have picked out useful bits from this session that you can use in your routine professional life. So thank you very much. Do take the opportunity to network with Khurram in the WhatsApp group. I hope you will enjoy that as well. Thank you very much once again. Take good care of yourself. okay. Bye-bye. Thank you very much, Karam Saab. Thank you very much, Harun Okay. Saab. Yes. Sorry, Shahid, I forgot to mention you. I didn't know you were there. So thank you very much, Shahid, too. Thank Okay. you. Thanks a lot. Thanks a lot. Hafiz.